Definition. Prepositions are words that are used to link one part of the sentence to another. Prepositions show the position of the object or subject in a sentence. हरफ़े जार वो अल्फाज हैं जो जुमले के एक हिस्से को दूसरे से जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हरफ़े जार एक जुमले में इतिराज़ या मौजू की पोजीशन को ज़ाहिर करता है। Some preposition examples. In, out, besides, in front of, below, opposite, etc. Types of prepositions. Time prepositions. Place prepositions. Movement prepositions. Prepositions of time. Basic examples of time prepositions include at, on, in, before, and after. They are used to help indicate when something happened, happens, or will happen. It can get a little confusing though, as many different prepositions can be used. वक्त के तकाज़ों की बुनियादी मिसालों में शामिल हैं, पर अंत में पहले और बाद में। उनका इस्तेमाल इस बात की निशानदही करने के लिए किया जाता है कि कब कुछ हुआ, होता है या होगा। अगरचे ये थोड़ा सा उलझ सकता है, जैसा कि बहुत से मुख्तलिफ हरफ़े जार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। Prepositions of time examples. Example number 1. I was born on July 4, 1982. मैं 4 जुलाई 1982 को पैदा हुआ। Example number 2. I was born in 1982. मैं 1982 में पैदा हुआ। Example number 3. I was born at exactly 2 a.m. during one particular moment. मैं ठीक 2 बजे पैदा हुआ था, एक खास लम्हे के दौरान। Example number 4. I was born 2 minutes before my twin brother. मैं अपने जुड़वा भाई से 2 मिनट पहले पैदा हुआ था। Example number 5. I was born after the Great War ended. मैं अजीम जंग के खात्मे के बाद पैदा हुआ था। The above makes it seem quite difficult, with 5 different prepositions used to indicate when something happened. However, there is a set of guidelines that can help decide which preposition to use. मुंदरजा बाला उसे काफ़ी मुश्किल मालूम होता है, 5 मुख्तलिफ हरफ़े जार के साथ ये बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कब कुछ हुआ है। ताहम रहनुमा खतूत का एक सेट मौजूद है जो ये फैसला करने में मदद कर सकता है कि कौन सा हरफ़े जार इस्तेमाल करना है। Uses prepositions of time. For years, months, seasons, centuries and times of day, use the preposition in. सालों, महीनों, मौसमों, सदियों और दिन के औकात के लिए इसमें इस्तेमाल करें। Example number 1. I first met Sarah in 1987. मेरी पहली मुलाकात 1987 में सारा से हुई थी। Example number 2. It's always cold in January. जनवरी में हमेशा सर्दी होती है। Example number 3. Easter falls in spring each year. ईस्टर हर साल मौसम बहार में आता है। Example number 4.
The Second World War occurred in the 20th century. दूसरी आलमी जंग 20वीं सदी में हुई. Example number 5. We eat breakfast in the morning. हम सुबह का नाश्ता करते हैं. For days, dates and specific holiday days, use the preposition on. दिनों, तारीखों और मखसूस तारीख के दिनों के लिए पर इस्तेमाल करें. Example number 1. We go to school on Mondays, but not on Sunday. हम पीर को स्कूल जाते हैं, लेकिन इतवार को नहीं. Example number 2. Christmas is on December 25th. क्रिसमस 25 दिसंबर को है. Example number 3. Buy me a present on my birthday. मेरी सालगिरह पर मुझे एक तोहफा खरीद कर दी. For times, indicators of exception and festivals, use the preposition at. औकात के लिए इस्तिस्नाई और त्योहारों के इशारे इस पर के से तरफ हालत में बजे वक्त के साथ इस्तेमाल करें. Example number 1. Families often argue at Christmas time. खानदान अक्सर क्रिसमस के वक्त बहस करते हैं. Example number 2. I work faster at night. मैं रात को तेजी से काम करता हूँ. Example number 3. Her shift finished at 7 p.m. उसकी शिफ्ट शाम 7 बजे खत्म हुई. Before and after should be much easier to understand than the other examples of prepositions of time. Both are used to explain when something happened, happens or will happen, but specifically in relation to another thing. इससे पहले और बाद में वक्त की पेशकश की दूसरी मिसालों से समझना बहुत आसान होना चाहिए. दोनों का इस्तेमाल इस बात की वजाहत के लिए किया जाता है कि जब कुछ हुआ, होगा या होगा, लेकिन खास तौर पर किसी और चीज के सिलसिले में. Example number 1. We will not leave before 3 p.m. हम 3 बजे से पहले नहीं निकलेंगे. Example number 2. Sarah comes before Aska in the line, but after Aima. सारा लाइन में अज़का से पहले आती है, लेकिन आइमा के बाद. Other prepositions of time could include during, about, around, until and throughout. वक्त के दीगर असनाफ में शामिल हो सकते हैं, दौरान, तकरीबन, इर्द-गिर्द, जब तक और भर में. Example number 1. The concert will be staged throughout the month of May. ये कंसर्ट मई के पूरे महीने में मुनक्किद किया जाएगा. Example number 2. I learned how to swim during the holidays. मैंने छुट्टियों के दौरान तैरना सीखा. Example number 3. He usually arrives around 3 p.m. वो आमतौर पर 3 बजे के करीब आता है. Example number 4. It was about 6 in the morning when we made it to bed. सुबह के तकरीबन 6 बज रहे थे जब हम बिस्तर पर पहुंचे. Example number 5. The store is open until midnight. दुकान आधी रात तक खुली रहती है. Prepositions of place.
To confuse matters a bit, the most common prepositions to indicate time, on, at, in, are also the most common prepositions to indicate position. However, the rules are a little clearer as place prepositions are a more rigid concept than time prepositions. मुआमलात को थोड़ा सा उलझाने के लिए वक्त की निशानदही करने के लिए सबसे ज़्यादा आम तकाज़ा है। ऑन, एट, इन, प्रीपोजिशन की निशानदही करने के लिए सबसे ज़्यादा आम अस्तारा हैं। ताहम क़वाइद क़दरे वाज़ेह हैं क्योंकि जगह की पेशकश वक्त की निस्बत ज़्यादा सख्त तस्वुर हैं। Prepositions of place examples. Example number 1. The cat is on the table. बिल्ली मेज़ पर है। Example number 2. The dogs are in the kennel. कुत्ते कैनल में हैं। Example number 3. We can meet at the crossroads. हम चौराहे पर मिल सकते हैं। Uses prepositions of place. On is used when referring to something with a surface. सतर के साथ किसी चीज का हवाला देते वक्त आन इस्तेमाल होता है। Example number 1. The sculpture hangs on the wall. मुजस्समा दीवार पर लटका हुआ है। Example number 2. The specials are on the menu, which is on the table. स्पेशल्स मेन्यू पर हैं, जो मेज पर हैं। In is used when referring to something that is inside or within confined boundaries. This could be anything, even a country. इन इस्तेमाल किया जाता है जब किसी ऐसी चीज का हवाला देते हो जो अंदर या महदूद हुदूद के अंदर हो। ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि एक मुल्क। Example number 1. Hashir is in France, visiting his aunt in the hospital. हाशिर फ्रांस में है, अस्पताल में अपनी खाला से मिलने गया है। Example number 2. The whiskey is in the jar in the fridge. विस्की फ्रिज में जार में है। At is used when referring to something at a specific point. किसी खास मकाम पर किसी चीज का हवाला देते वक्त एट इस्तेमाल होता है। Example number 1. We will meet at the airport. हम हवाई अड्डे पर मिलेंगे। Example number 2. The boys are at the entrance at the movie theater. लड़के फिल्मी थिएटर के दाखिली दरवाजे पर हैं। Lots of other prepositions of place, such as under, over, inside, outside, above and below are used in English. There is, however, a lot less confusion as they refer to rigid positions rather than abstract ones. जगह की बहुत सी दूसरी सूरतें जैसे नीचे, ऊपर, अंदर, बाहर, ऊपर और नीचे अंग्रेजी में इस्तेमाल होते हैं। ताहम बहुत कम उलझना है क्योंकि वो तजरीदी उर्दू की बजाय सख्त पोजीशनों का हवाला देते हैं। Example number 1. The cat is under the table. बिल्ली मेज के नीचे है। Example number 2. Put the sandwich over there. सैंडविच वहाँ ऊपर रखो। Example number 3. The key is locked inside the car. चाबी गाड़ी के अंदर बंद है। Example number 4. They stepped outside the house. वो घर से बाहर निकले। Example number 5.
Major is ranked above corporal. मेजर को कारपोरल से ऊपर दर्जा दिया जाता है। Example number 6. He is staring at you from below the stairs. वो सीढ़ियों के नीचे से आपको घूर रहा है। Prepositions of movement. Prepositions of movement are quite easy to understand as they are less abstract than prepositions of place and time. Essentially, they describe how something or someone moves from one place to another. The most commonly used preposition of movement is to, which usually serves to highlight that there is movement towards a specific destination. हरकत की पेशकशी समझना काफ़ी आसान है क्योंकि वो जगह और वक्त की पेशबंदियों से कम तजरीदी हैं। बुनियादी तौर पर वो बयान करते हैं कि किस तरह कोई चीज़ या कोई एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। नकल हरकत का सबसे आम इस्तेमाल किया जाता है, जो आमतौर पर इस बात को उजागर करने के लिए काम करता है कि किसी मखसूस मंजिल की तरफ हरकत है। Prepositions of movement examples. Example number 1. He has gone on vacation to France. वो छुट्टियों पर फ्रांस गया हुआ है। Example number 2. I will go to bed when I'm tired, in the direction. जब मैं थक जाऊंगा तो मैं सोने जाऊंगा। सिंप में। Other more specific prepositions of movement include through, across, off, down and into. These prepositions can sometimes get mixed up with others. While they are similar, they have individual meanings that add context to the movement. नकल हरकत के दीगर मखसूस असनाफ में शामिल हैं, के ज़रिए पार, बंद, नीचे और अंदर। ये असनाफ बाज़ औक़ात दूसरों के साथ खुल मिल जाते हैं। अगरचे वो एक जैसे हैं, उनके इनफिरादी मानी हैं जो तहरीक में सयाक़ व सबाक़ को शामिल करते हैं। Uses prepositions of movement. Across refers to moving from one side to another. इस पार से मुराद एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है। Example number 1. Ali traveled across America on his motorcycle. अली ने अपनी मोटरसाइकिल पर पूरे अमेरिका का सफ़र किया। Example number 2. Rebecca and Miral are swimming across the lake. रबीका और मेराल झील के इस पार तैर रहे हैं। Through refers to moving directly inside something and out the other end. ज़रिए से मुराद बराह रास्त किसी चीज़ के अंदर और दूसरे सिरे से बाहर जाना है। Example number 1. The bullet Kabir shot went through the window. कबीर की गोली खिड़की से गुजरी। Example number 2. The train passes through the tunnel. ट्रेन टनल से गुजरती है। Into refers to entering or looking inside something. इंटू से मुराद किसी चीज़ के अंदर दाखिल होना या देखना है। Example number 1. Jamil went into the room. जमील कमरे में चला गया। Example number 2. They stare into the darkness. वो अंधेरे में घूरता है। Up, over, down, past and around indicate directions of movement. ऊपर ऊपर, नीचे, माजी और इर्द गिर्द हरकत की सिमतों की निशानदही करते हैं। Example number 1. Jack went up the hill.
जैक पहाड़ी पर चढ़ गया। Example number 2. Jill came tumbling down after. जिल इसके बाद गिरते हुए नीचे आई। Example number 3. We will travel over rough terrain on our way to Grandma's house. हम दादी के घर जाते हुए नाहमवार इलाके का सफर करेंगे। Example number 4. The horse runs around the track all morning. घोड़ा सारी सुबह पटरी के गिर्द दौड़ता है। Example number 5. A car zoomed past a truck on the highway. हाईवे पर एक कार एक ट्रक के पीछे से गुजरी।